platform to give in the insights of their researches, so that the media education can flourish and there can be all the knowledge that is possible from his end to all the media people can check it, and they can have various dimensions of media education in front of them. His efforts had worked upon bringing up special issues also on very specific topics in connection to the journal itself, Communication Today. So when he started this webinar series, at that time the umbrella was Communication Today, the media journal, which is a bilingual Hindi and English. Both the languages are being promoted by his efforts. After completing 100 webinars under the umbrella of Communication Today, Professor Bhanavat met Professor Huda, and Bharati Vidyapeeth joined hands together. And after that, we started this mission. And today is the 148th webinar in collaboration with Bharati Vidyapeeth, New Delhi. It's all the efforts of Professor Sanjeev Bhanavat, who has made a very strong point that on all the various different media topics, more than 250 eminent speakers have been here on this platform, spreading their knowledge and giving the vital information to all the listeners, to the audiences. Plus to that, leaving no stone unturned, he made a point that all these talks can be recorded, so that in case if people are not free at the very moment of the webinar conduction, they can later on see and get the detailed knowledge of that relevant topic, whichever they are interested to research upon. So it has been a great effort from his side that all the different and contemporary topics are being discussed on this platform every now and then. As in the similar status, we can say that today we are going to discuss about transmedia storytelling, need of the hour itself. The topic is saying that this topic is the need of the hour. Absolutely correct. We are actually facing and observing and witnessing and working and functioning upon so many various platforms, social platforms. So now here, how to transfer that knowledge? So basically it's in the form of storytelling. So of course, Professor Nayak is going to talk about, Nahak is going to talk about this, that how it is going to be interesting, and there has to be an interconnectivity so that people can get that vibrancy through those platforms, so that they can be connected. The major part, the backbone, has to be the connection, how people are going to get connected so that they can listen to those stories. Maybe it is related to the knowledge delivering session or entertainment or anything, any specific message that has to be delivered to the audience. So I would like to hand over the platform back to Professor Sanjeev Bhanavat for the further proceedings. Thank you so much, sir. You are muted, sir. You are muted, sir. प्रियंका जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है शायद। जी सर, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं चेक कर रही हूँ। अंशित गुप्ता कौन है यहाँ पर जिनको होस्ट बन गए हैं सर? 1 मिनट दीजिए आप मेरे को, मैं भी करती हूँ। हाँ, वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है बार बार। ये भी तकनीकी व्यवधान है, मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है ना? आवाज नहीं आ रही है आपको? सर मेरे को 2 मिनट और दीजिएगा। हम्म। तो पहले की तो रिकॉर्डिंग हुई है, अभी कुछ टाइम पहले अंशित गुप्ता होस्ट बन गए हैं और उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक दी है, तो मैं वही चेक कर रही हूँ। अच्छा। मैम मैं कैसे होस्ट बन गया मुझे समझ नहीं आया। हाँ तो मैंने आपने जैसे भी नोटिस किया।
नहीं मैंने ओके कुछ नहीं ठीक किया, है मेरा बस फाइन, स्क्रीन वैसे मैंने वापस आपको ही बना दिया मगर। डन ठीक है ओके। ओके ठीक है, स्टार्ट सर करें। 1 मिनट मैं प्रोसेस कर देती हूँ वापस से। कुछ तकनीकी व्यवधान। डॉक्टर उषा साहनी के प्रति आभार, जिन्होंने सरस्वती वंदना के साथ साथ इस वेबिनार की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। हमारे इस वेबिनार में 350 से अधिक एक्सपर्ट्स विभिन्न विषयों पर अब तक संवाद कर चुके हैं और ये पूरी जो हमारे डेलिब्रेशंस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। और कम्युनिकेशन टुडे के 28 वर्षों के सभी अंक आप communicationtoday.net इस वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। और इसी तरह से आप हमारे YouTube के जितने भी ये डिस्कशंस वगैरह हैं उनको भी देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो कमेंट बॉक्स है उस YouTube पर, उस पर अपने जो भी सजेशंस हैं, विचार हैं, उसको आप लिखें, ताकि इस अभियान को जो हमने एक मीडिया, साहित्य और संस्कृति विषयक मुद्दों को लेकर के ये जो शुरू किया है उसको हम आगे बढ़ा सकें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वे आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर फकीर मोहन नाहक, उनका ई बुके से स्वागत अभिनंदन करें। प्रियंका सिंह भारतीय विद्यापीठ दिल्ली में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पिछले कुछ वर्षों से अध्यापन कार्य कर रही हैं। आपने अपना मास्टर्स माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से किया है और रेडियो पॉडकास्टिंग में आप अपनी पीएचडी जो है वो कर रही हैं। इसके पूर्व आप रेडियो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रही। मीडिया मैनेजमेंट के अनेक इवेंट्स के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव रहा है। रेडियो कार्यक्रमों की एडिटिंग और उनके प्रेजेंटेशन में आपका स्पेशलाइजेशन है। अकादमिक गतिविधियों से आपका सक्रिय जुड़ाव है और हमारे इस वेबिनार श्रृंखला का जब से हमारा भारतीय विद्यापीठ के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, इसका सारा जो तकनीकी पक्ष है मुख्य रूप से वो आप देख रही हैं। इस पूरे आयोजन को सहज सुचारू रूप से संचालित करने में भारतीय विद्यापीठ आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक प्रमुख कॉलेज है दिल्ली का, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपके पास आधुनिक जो संसाधन है मीडिया एजुकेशन की इफेक्टिव टीचिंग के लिए, प्रभावी अध्यापन शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, उसको आपने अपने यहाँ विकसित किया है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें विद्यार्थी नियमित रूप से काम कर रहे हैं। आपका अपना रेडियो चैनल है। तो इस प्रकार से एक व्यावहारिक प्रशिक्षण की दृष्टि से भारतीय विद्यापीठ ने मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। लगभग 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों की, युवा शिक्षकों की टीम इस महाविद्यालय के साथ है, जो प्रोफेसर एम एन हुडा के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर नाहक का ई बुके से स्वागत अभिनंदन करें। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज के हमारे जो स्पीकर हैं मैं उनका ई बुके से वेलकम करूं। सर, मोस्ट वेलकम इन आवर वेबिनार एंड थैंक यू सो मच यू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी दैट हम आपको सुन पाए और आप इस स्टोरी टेलिंग को ब्रॉडली हमें एक्सप्लेन करें, बिकॉज फ्रॉम द लिटिल, मतलब सो वेरी लिटिल एज वी स्टार्ट लिसनिंग आवर मदर्स फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ स्टोरी ओनली, और आज उसी टॉपिक पे हमें इतना डिटेल आपको सुनने का मौका मिलेगा, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू। एंड बाय दिस बुके हमारे डायरेक्टर सर हमेशा एक कोट करते थे कि इस बुके की फ्रेगनेंस को हमें फील करना है, इसकी फ्रेशनेस को हमें फील करना है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड आवर स्पीकर टू फील ऑल द फ्रेशनेस एंड फ्रेगनेंस ऑफ दिस बुके। थैंक यू Thank you very much. Thank you very much. यार, हमारी भी यही उम्मीद है कि इस ई बुके के जो पुष्प हैं उनकी उस खुशबू को, विचार रूपी खुशबू को हम दिग दिगांतर में इसी प्रकार प्रसारित करते रहे। ये जो माध्यम है, कोविड की उन अनेक आपदाओं ने, चुनौतियों ने एक नया विकल्प मनुष्य को दिया है
या यूं कहूं कि मनुष्य ने अपने जिजीविषा जुनून, अपनी प्रयोग धर्मिता, सृजनशीलता से एक नया माध्यम जो प्रचारित प्रसारित किया है, इसके माध्यम से उन भौगोलिक दूरियों को हमने तोड़ते हुए दुनिया के हर उस कोने में पहचान बनाई है जो हमारी भाषा और प्रतीकों को समझ सकने में सक्षम है। तो विचारों की ये खुशबू, जिस उद्देश्य से हमने विचार विमर्श की श्रृंखला प्रारंभ की है, उस उद्देश्य को एक अभियान के रूप में बदलने में हमारी मदद करेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ, जैसा अभी बताया गया कि आज का जो हमारा विषय है, ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग द नीड ऑफ द आवर, जिसमें प्रोफेसर फकीर मोहन नाहक आपसे बात करेंगे। वस्तुतः आज का जो दौर है तकनीक का दौर है और कितने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ गए हैं। तो ऐसे दौर में ये जो ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग की जो अवधारणा है, मुझे लगता है एक नया क्रांतिकारी कदम है। यह कहानी कहने का ऐसा तरीका है जिसमें एक कहानी को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम किस तरह से कह सकते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो तरीका है वो उन कहानियों के कंटेंट को समृद्ध बनाता है, हमारे कहने के तरीके को प्रभावी बनाता है और जो हमारे दर्शक और श्रोता हैं उनको एक गहन अनुभव की अनुभूति कराता है। आज जिस तरह से तकनीक का विस्तार हो रहा है, उसमें स्टोरी टेलिंग का अपना एक विशेष जुड़ाव है। आज का जो दर्शक या श्रोता है केवल कहानी सुनना नहीं चाहता है, वो कहीं ना कहीं उसका हिस्सा भी बनना चाहता है। चाहे वो टेलीविजन है, स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे हमारे पास संसाधन हैं जहां आप ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग के अलग अलग विकल्प और प्रक्रियाओं को ढूंढ सकते हैं और प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकने में सक्षम है। ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग की खूबी है कि वो एक कहानी को अलग अलग कोण से, अलग अलग माध्यमों से प्रस्तुत कर सकती है। एक फिल्म की मुख्य कहानी है, जब उसी को आप कॉमिक्स या उपन्यास में पढ़ते हैं तो एक अलग तरीके से अन्य पात्रों और उपकथाओं को आपके सामने उजागर करेगी और कहानी को अधिक गहराई और व्यापकता देने में वो सक्षम होगी। इसी तरह से ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग का भी एक प्रभावी उपकरण बन सकने में सक्षम है। तो किस तरह से ये जो हमारी कंपनीज आ गई हैं, जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में जुड़ी हुई हैं, कैसे इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके अपने उपभोक्ताओं के साथ, अपने लक्षित वर्ग के साथ, टारगेट ग्रुप के साथ अपना एक संबंध जोड़ सकते हैं। किस तरह से विज्ञापन के माध्यम से आप अपनी कहानी कह सकते हैं, किस तरह से जो गेमिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं, और किस तरह से आप जो नवीनतम तकनीक है, हम अक्सर आज बात करते हैं कि इस तकनीक ने आपको AR और VR, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, इस दुनिया में जो हम प्रवेश कर गए हैं, इस आभासी संसार ने, उसने तो मुझे लगता है, और ये रही सही कसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी कर दी है, किस तरह से हम अपनी बात को उस प्रभावशाली ढंग से कह सकने में सक्षम है। चाहे हम इतिहास की बात करें, संस्कृति की बात करें, आपको ये खेल को देख रहे हैं, आज ये संभव है कि आप स्वयं उस ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मानो उस मैदान पर हैं और स्वयं खेल रहे हैं। कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स ने इस तरह की सुविधाएं आपको दे दी है कि उस स्टोरी को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। कई बार आप फिल्म देखने जाते हैं, वो थिएटर देखने जाते हैं, तो आप बात करते हैं कि यार काश उस डायरेक्टर ने या स्क्रिप्ट राइटर ने इस कहानी को ऐसे मोड़ दिया होता तो इफेक्टिव हो जाता। अब आपके हाथ में है, आप स्टोरी को किस रूप में देखना चाहते हैं। हजारों तरह की कॉम्बिनेशन वहां दिए गए हैं, आप ये तय नहीं कर सकते कि फिल्म कितनी देर में खत्म होगी। 10 मिनट में, चूंकि आपने उसको इस तरह से कर दिया, आगे से आगे उसके जो विकल्प आते हैं उनको आपने इस तरह से चूज किया कि वो कहानी 10 मिनट में खत्म हो जाए, और ऐसे चूज किया कि 1 घंटा चल सकती है। तो इस तकनीक ने आपके सामने कितनी संभावनाएं खोल दी हैं, इसकी कल्पना करना भी मुझे लगता है अब मुश्किल है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग केवल एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, इसके साथ कहीं अवेयरनेस और जागरूकता ये भी इसके साथ जुड़ता है, और उसका भी एक ये प्रभावशाली माध्यम जो है हो सकता है, क्योंकि आप उन सामाजिक मुद्दों पर यदि वो कहानियां कहते हैं तो वो सामाजिक जागरूकता का, हमारी सामाजिक विकृतियां, सामाजिक विद्रुपताएं जिनसे आए दिन हम कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, उसकी दिशा में भी कहीं काम कर सकता है। हमारी जो समकालीन समस्याएं हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की है,
जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के मुद्दों की बात हो रही है, उन बहुत सारे क्षेत्रों में कहीं इसका प्रभावी उपयोग हो सकता है। और जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, नए नए माध्यम आ रहे हैं, मुझे लगता है इस माध्यम में भी अपार संभावनाएं निहित है। किस तरह से हम एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस जो है अपने दर्शक और श्रोता के साथ वो इस विधा को और अधिक प्रासंगिक बना देगी। तो बहुत सारे इसके मुद्दे हैं जिस पर हम विस्तार से प्रोफेसर नाहक को सुनेंगे। डॉक्टर फकीर मोहन नाहक का बहुत व्यापक अनुभव है। लगभग 2.5 दशक से आप मीडिया इंडस्ट्री और मीडिया टीचिंग के साथ जुड़े हुए हैं। मूलतः उड़ीसा के रहने वाले, लेकिन आजकल जयपुर राजस्थान में आप अध्यापन कर रहे हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, उनका स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में वहां डायरेक्टर के रूप में आप इस विभाग को नेतृत्व दे रहे हैं। आपने उड़ीसा के बरहामपुर यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वहीं से आपने अपना जर्नलिज्म में मास्टर्स उपाधि भी प्राप्त की। इसके साथ साथ आपने एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान में भी मास्टर्स की उपाधि की और जर्नलिज्म में आपने जब ये कोर्स कर रहे थे बरहामपुर यूनिवर्सिटी का, वहां पर आपने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। प्रोफेसर नाहक पत्रकार से टीचिंग में जुड़ते हैं। शुरू में जो उनका करियर था वो जर्नलिस्ट के रूप में था और आपने जो अपना स्कूल कॉलेज टाइम था उस समय आकाशवाणी में आप एक कैजुअल अनाउंसर के रूप में, अस्थायी उद्घोषक के रूप में आपने अपने करियर की शुरुआत की। तो एक तरह से ब्रॉडकास्टर के रूप में भी आपने अपनी विशेष पहचान बनाई और हमारे देश के जो कोई प्रमुख टेलीविजन नेटवर्क है जैसे टी नेटवर्क, ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड, न्यूज 18 नेटवर्क, जी मीडिया कॉरपोरेशन आदि के साथ भी आपने काम किया और दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं इनके साथ भी आप स्वतंत्र रूप से जुड़े रहे। तो एक प्रकार से लगभग 2.5 दशक का आपका एक्सपीरियंस। और मणिपाल ज्वाइन करने के पहले आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ चंडीगढ़ के पास में एक जगह है, शायद मोहाली या कौन सी जगह है, वहां पर आपने लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया और अब जैसा मैंने आपसे कहा कि आप मणिपाल यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। शोध अनुसंधान में आपका व्यापक अनुभव है। आपने SCOPS, वेब ऑफ साइंस, UGC केयर और पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आपके अनेक रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हुए हैं। आप एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, राइटर और एक सोशल एक्टिविस्ट और रिसर्चर हैं। आपके 8 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 8 पुस्तकों का आपने संपादन और लेखन किया है और अनेक वैचारिक लेख आपने पत्र पत्रिकाओं में लिखे हैं। आप भाषाविद भी हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया तीनों भाषाओं में समान अधिकार से लिख सकने में सक्षम है। तो एक व्यापक अनुभव आपका मीडिया और टीचिंग का। मैं डॉक्टर नाहक से अनुरोध करूंगा कि ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग नीड ऑफ द आर एक बिल्कुल सर्वथा नया विषय है, इस पर हमने कभी चर्चा भी नहीं की है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जो आपके अनुभव हैं वो कुछ हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर फकीर मोहन नाहक। धन्यवाद सर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु मेरे आंखों से अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकते हैं, वैसे गुरुओं को ज्ञान की ज्योति के साथ, ज्ञान के प्रकाश के साथ जो मेरे अंधकार को दूर कर सकते हैं, उन गुरुओं को मेरा सत सत नमन। मैं नमन करता हूं प्रोफेसर भानावत सर को, जो मेरे गुरु के मित्र रहे और मेरे मार्गदर्शक रहे, और जो भी यहाँ पर गुरुजन है इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, उन सबको मेरा प्रणाम। मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। We all started our life with stories. I think you all will agree with me that our life, our learning started with stories. Our grandparents, you go back to your childhood when we were teeny tots, when we started learning the language, when we started learning how to speak, we started learning the stories. We learned stories from our grandparents. I am just sharing with you that when I was a child, my first teacher was my grandfather. He taught me what is story. He taught me
different stories from Mahabharata and Ramayana. When I was only 4.5 years old at that time, I was completely conversant with Ramayana and Mahabharata. Both the epical stories are told to me by my grandfather and grandmother. हम सब जानते हैं कि रामायण 7 खंडों में लिखा गया है. But when it comes to transmedia storytelling, I am telling the same story time and again on different platforms in different ways. When we talk about Ramayana is a huge epic of 7 volumes. But just imagine, I think most of you or some of you must have heard when somebody was asked that, can you tell me Ramayana in just 4 lines? If somebody is asked to tell the Ramayana in just 4 lines, think how difficult it is to tell Ramayana in 4 lines. Still, the scholar came out with those 4 lines. Adau Rama Tapo Vanadi Gamanam Hatva Mrugi Kanchanam Vaidehi Haranam Jatayu Maranam Sugriva Sambhasanam Vali Nikrahanam Samudra Taranam Lanka Puri Dahanam Paschat Ravana Kumbha Karnadi Hananam Etat Ramayanam. The entire Ramayana ended with just 4 lines. Somebody else came, somebody challenged that, can you tell the entire Ramayana in 1 line? It's a even more bigger challenge for the scholar. But the scholar said, yes, I can tell the Ramayana in 1 line. Can anyone tell me Ramayana in 1 line? Yes. Sita Haran, Ravan Maran, Ramayana khatam ho gaya. Only 1 line. That means I am telling the same story in different forms. We have been listening these stories in different forms on different platforms by different speakers, different storytellers in different ways, in different forms. That traditional storytelling started much before we learned the language. We learned the language to express our emotions. We learned the language to tell our story, to tell our feelings, to tell our requirements, everything, whatever we communicated, we learn it in a very late stage. The language was invented or developed or discovered or created or whatever you say, it was in a very later stage. But think about those storytellers, those who have told you the story about those ancient days when the fire was invented, or the wheel was invented, and the human race was progressing and entering into the scientific development. Those stories are told as paintings on the caves. Those cave paintings, they started narrating the stories of all those ancient days. From those days, just imagine the stories in the caves, then the oral tradition of storytelling, now the story of ChatGPT with artificial intelligence. No need to tell your story. You just express your feeling. You write the prompt. The story is developed by your generative AI, and that story also recorded in the form of audio or created in the form of video with the help of artificial intelligence. So this is a very long journey, but don't you think that now the time is passing very fast? Don't you think that we are on the express highway? Yes, we are on the express highway as if we are traveling the time machine. We are in such an era where every time the technology is getting changed, and as the creative person, as a journalist, as a communicator, or as a storyteller, or as a writer, what is the biggest challenge for all of us? Can anyone tell me what is the biggest challenge? The biggest challenge is to create everyday new content for your audience, for your viewers, for your listeners, for your readers. If you are writing a story today, you can't run that story tomorrow. If you are watching a television television series, a soap opera on television every day at 7 p.m. in the evening or 7:30 in the evening or at any time in the fixed point chart of a television channel, if you're watching a television program,
Can you watch the same program tomorrow, the same program day after tomorrow, the same episode? No. If we are not unable to accept that, if we are not ready to watch the same program the next day, then the biggest challenge for the creator or the producer or the writer or the storyteller is to create new stories every day. And that story, even if when we talk, I started my talk from Ramayana and Mahabharata. Ramayana and Mahabharata, it is said that there is no new story written in the present day or in the globe, in the universe. There is no new story written beyond Mahabharata. Whatever stories you are writing now, that is having a connection with Mahabharata. That is the part of Mahabharata. That means the elements that you are carrying in the story, that is available there in the Mahabharata. I'm coming to, with the permission of the chair, I'm coming to my presentation. And we will proceed what exactly is storytelling and how the storytelling paves our path. Is it visible? Yes, it's visible. Okay. Visible, sir. So today's topic is transmedia storytelling, need of the hour. Initially, we'll talk about the storytelling, and transmedia storytelling. Then we will talk about the need of the hour, why it is required in the present day. What is the concept of storytelling? Storytelling is a universal human experience dating back to the ancient civilization, from where I started, from the cave paintings, from the untold stories, from those stories which are told by the people who were unable to speak, and they conveyed their stories for generations together in the form of, from the ancient civilization, in the form of artifacts, in the form of paintings, in the form of their art and craft. It involves the art of crafting and conveying narratives that communicate meaning, emotions, and cultural values. The story is not only about a person or about a time or about a happening. It is about the emotions. It is about the cultural values, and the story is carrying those cultural values in it. Stories are not merely sequence of events, but structured narratives that follow patterns such as exposition, rising action, climax, falling action, and resolution. It is not just a chronological event. It is an altogether completely different in nature, because it carries both chronology and non-chronological incidents. And what are the elements of a story? First is the plot and the structure. How the story is written, on which plot, what are the central characters, and how the story is developed, how the story always starts from an ideation, from one line. As I was giving the example that Sita Haran Ravan Maran, the one liner is the idea, the fundamental line of Ramayana, but it is developed to a 7-volume of epic, a completely expanded story. So that is the plot. The plot and structure, the arrangement of the events with a story which includes chronological order and non-linear presentation. What non-linear presentations? If it is having the branches simultaneously, if you go to here, I am giving you the example of the Mahabharata is the best example, right? You are running the story of Mahabharata, at the same time you are telling the story of Bhim with Hidimba, or Bhim about Bhim and Ghatotkacha taking away from the main track. These are the side stories. These are the branches. Those branches are presented in the non-linear presentation. So that is the plot and structure. There comes the characters, the protagonist, the antagonist, the supporting characters, the lead character, your hero, heroine. All these are the central characters.
They are the protagonist, the antagonist. If you talk about Ramayana, then there comes your Ram, Sita as your protagonist, or the supporting characters, Hanuman, Sugriv, Bali. All these are your supporting characters, and as antagonist you find Ravan and his associates as your antagonist. Narrative voice, in which form it is told, in which form we are going to tell our story, the perspective from which the story is told, whether it is a first person, it's a narration as if I am moving in the first person narration, as if I am the central character, I am narrating the story, or the story is a third person narration where it is told from somebody else's perspective, or it is omniscient narration from different perspectives. The best example is your Malgudi days, which we have watched in our school days when it was on air. Themes and motives. What is the central idea of a story? Or basically the central idea, which is recurring element that provides depth and coherence to the narrative. You can go to the Godan. You can take the example of Pratibha Ray's Yagyanseni. The central idea is narrated. Even you go to the stories of Fakir Mohan Senapati, he has written those stories where the central idea, the first story I'm talking about, a story, Revati, which was surrounding, which was revolving around the central character Revati, who was struggling for education. So what is the central idea? The theme and motive, these are the elements of a story. Coming to the next point, what is the importance of storytelling? Why we are discussing about storytelling? Is it really important? Yes. Storytelling is important because it is used for cultural transmission. We talk about Vedas, we talk about Upanishads, we talk about basically the cultural values that are transformed from one generation to the other. We all have seen the stories of, we all have read the stories of Panchatantra, which all the stories were based on moral values, the cultural belief system, the cultural the traditions, the history. All those stories are transferred through the oral tradition, oral storytelling tradition from one generation to the other, and through them the culture also got transmitted to the next generation and the generations to come. Emotional connection. When we are reading a book, I 100% I can say that when you are reading a book, you are involved in such a way that when you are reading a story, you become part of it and you get emotional. You find tears in your eyes. You get emotional. Why it is happening? That means the story itself carries the emotions, and those emotions establishes the connection, emotional connection with the story, with the reader or the receiver. In communication language, when we talk about the reader or the listener, they are the receivers, and they respond, they get connected to the emotional, to the emotions that are manifested in that story. Meaning making. The story always represents a meaning. Through storytelling, individuals make sense of their experiences and navigate moral dilemmas, existential questions, and societal issues. There are symbolic representation in the stories where we can interpret what exactly the storyteller wants to convey, what exactly the storyteller wanted to tell us through these expressions. That is one of the major reason why we go for storytelling. Entertainment and engagement. Storytelling always. Is there anything anyone want to say?
सवेरे उठा सवेरे नहीं अब रखेगी सवेरे सवेरे मैं तेल लगा रहा था Mr. Vinay, पूरा लगा लो हाँ kindly mute हाँ yourself. हां सवेरे रख दे मैं देख रही थी So let me do it. Oh, somebody is speaking actually, no? Okay. Okay. Entertainment and engagement. When we read stories, when we convey our stories, the story is the most effective way to convey our message. When we tell the story, right, we engage the people directly. When we are telling, we are going to going to the classroom or addressing a group of people. If directly I am telling about the theories, if I am directly conveying a concept, people may not take interest. But the moment if I am telling a story, immediately it drags the attention of people. So the importance of storytelling is entertainment and engagement. People immediately get connected to the storyteller and they are engaged and they get entertained by the style of storytelling or the kind of story presented by the storyteller. And another importance is your social importance. Narratives can shape public opinion, inspire social change, and influence collective values and behaviors. Why we go for storytelling? If you watch the films of Satyajit Ray, Apu trilogy, right? If you watch the old films, where basically the narratives are around the societal values, the films can create, the stories can create social influence through their message, and it can inspire people for change. So this is the importance of storytelling. Now, coming to the archetypes of Campbell in storytelling. What is archetypes of Campbell? Joseph Campbell was a prominent American mythologist, writer, lecturer, known for his work in comparative mythology and comparative religion. He developed a concept that is called monomyth, also known as hero's journey, where the central character is the hero and all others revolve around him. And he studied different religions and different mythologies, and he developed a category of characters. Those characters are called as your archetypes, the types of characters. So that archetypes are recurring symbols, characters, motifs, or themes found throughout the literature, folklore, religion, and mythology. They represent fundamental human experiences and can evoke deep emotions and recognition in readers and audiences. I just want to tell you, when we smile, the smile is universal. Do Americans smile in a different way? Do any other person who is living in other part of the world smile in a different way? Do they cry in a different way? No. So all those human emotions are universal. So those emotions are reflected in these stories. And Joseph Campbell developed that archetypes, and which commonly appear in myths and stories from various cultures around the world. These archetypes, from basic building blocks of storytelling, originate with universal human experiences that I have already discussed. What are all those major archetypes? The hero's journey, the hero, the mentor, the threshold guardian, the shadow, the trickster, the damsel in distress. These are the major archetypes. These are the character types which what we find in basically in major stories. When we talk about hero, here I take the example of Ram, I take the example of Arjun. These are the central characters. These are the heroes, right? Those who led the story. The entire story of Ramayana or Mahabharata, right? They revolved around these central characters. So these are the heroes. He is the major archetype of Joseph Campbell, who developed it. Then comes the mentor. In Mahabharata, Lord Krishna
is the best example of your mentor who mentored Arjun in Mahabharat war, and entire Mahabharat was monitored, organized, and executed, you can say, entire with the help of the mentor, Lord Krishna. Hatova prapsyasi swargam जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम तस्माद्युतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हारोगे तो वीर गति मिलेगा, जीतोगे तो इस धरती का राजा बनोगे, तो लड़ना तो ही पड़ेगा। This kind of motivation through Gita was given by the mentor. So the character Krishna is categorized in the second group of characters, that is the mentor. Then comes the threshold guardian. The threshold guardian is when we talk about Bhishma, Drona, or in Mahabharata the Viradha. These are the characters where those who have worked as the threshold guardian. They always monitored and they always mentored the protagonist to perform their work, and they always tested them before any test. Suppose in Mahabharata, in the Kurukshetra war, when Arjun faces Bhishma consoles him, tests him. So these are the threshold guardians. They are the third archetype. Then comes the shadow, who is opposite to the hero. The hero's opposite is the shadow, and the shadow is, in our language, whom we call as the villain. And the best example is Ravan or Duryodhan. They are the archetypes of shadow, and those who are always represent the antagonist, those who work as the villain, and those who try to obstruct or block the hero's progress. Then comes the tricksters. These are the people whom you will find in both the camps, in both the hero's camp and in the villain's camp, right? Just like Narad, just like Krishna's childhood. If you talk about the childhood, you will find he's everywhere, right? So playing with the story, with their tricks, these type of characters you will find in the majority of the stories. There comes the sixth or the last archetype, that is the damsel in distress. Damsel is always a lady character, who is the leading lady and who is always in distress, in pain, right? And basically who always in need of the protection, who always needs to be protected by the hero. The hero jumps to the scene and protects the heroine from the villain or from the obstacles of the life. So these are the examples. You can take Sita or Draupadi. These are the damsels in distress in the major archetype, in the sixth archetype. So we discussed about the stories, the ancient storytelling to the modern day storytelling, and what are the stories, why it is important, and the major archetypes of the stories. Now coming to the topic, transmedia storytelling. Transmedia storytelling refers to the technique of telling a story across multiple platforms, where each platform contributes uniquely to the overall narrative. Not that if I'm telling the story in one platform and when I change the platform, I will make the story as it is presenting there. That is not transmedia storytelling. When the medium is changed, the mode of storytelling, the style of storytelling is changed. Not that a story is prepared for radio
I'm going to make a film out of that radio talk or radio story, or from there I go for making an audiovisual story for a television. The moment I change the platform, I must change the style of presentation and the content design in that story, and every platform must add value to it. Rather than repeating the same content across different mediums, each medium offers a distinct element of the story, encouraging audience participation and engagement. Here, when we go for multiple platforms, we engage the audience from different platforms. Every platform or every medium has its own viewers, own receivers. Whether when you are talking about radio, somebody is listening radio but not watching television, not reading the newspaper. Who is reading the newspaper may not be watching the television. So for every platform, we have different target audience. So when we tell the story, we are targeting different target audience. So based on that, we have to design our content in transmedia storytelling. It is a narrative technique where a story unfolds across multiple platforms and formats, with each medium contributing uniquely to the overall experience. This approach enhances the depth of the narrative and offers diverse entry points for audiences. And unlike adaptation, where a single story is retold in another medium, transmedia storytelling creates interconnected stories across various platforms, enriching the universe of the narrative. Here, I just want to tell one interesting thing. When we are watching, say example I'm taking you, we are watching the series of Mahabharata. At the same time, we take one character out of Mahabharata and we elaborate that character in another form of storytelling. Suppose the best character I found in Mahabharata is, say, Karna, Danveer Karna, right? He is a unique character. If you have read the book Rasmi Rathi by Dinkar Sahab, the entire book is based on Karna. So Karna is a part of Mahabharata, but we have taken him to a different platform and we told that story in more narrative way beyond the main series. So we are adding value to the story in the form of transmedia storytelling. So when we talk about transmedia storytelling, we use the print medium, we use the electronic medium, both television, both radio, and we take films, right? And we take the video games, we take animated films, we go for comics. So all these are the platforms where the story can be presented in different forms. These are the key characteristics of transmedia storytelling. First of all, it is a story expansion. Each medium adds new layers to the story rather than duplicating it. As I was giving you the example, Mahabharata is the story running somewhere and you are finding Karna as a different story on any other platform, either in the form of comic or in the form of a play or in the form of a book, in the form of a poetry. But it is completely different, but connected to the cardinal point, to the central theme of the story. So as a whole, when we go for multiple platforms, all these multiple platforms give us different experience. At the same time, those experience collaboratively and collectively contribute to the central story. Audience participation. It encourages engagement, fan involvement, and exploration of the story world. When you suppose grandparents, they love to watch the traditional Ramayana or Mahabharata, but at the same time, the children, those who do not understand the epic, what they do, they go for the comic. They read they read the story of Chota Bhim. They're watching the cartoon of Chota Bhim.
And who is Bhim? Bhim is a part of your Mahabharata. Just in that way, we are changing the platform and we are changing the narrative style of storytelling there with an additional value, and we engage audience from different age groups, different backgrounds, and different target groups. So audience, those who are not into the the central story, they can be engaged with different platforms. Cross-platform presence. In transmedia storytelling, it includes various formats like movies, TV series, books, comics, video games, social media, and interactive websites where those stories can be conveyed to different group of people. And unique contribution, I have already told that each medium uses its strength to build on the narrative. And Strength. as a whole, collectively, they make the storytelling Strengthen. experience Strengthen. completely different. कितना बटोर मेरे सूरजा मुएरा हुए तोरा तू पी दे कर बरे अरे कर मेरे कागज के बटोर करे काहे इतना पड़ा लेते रे Then comes to the now I am coming to the examples of this transmedia storytelling. If you can remember the Harry Potter series, the core story is the 7-book series by J.K. Rowling and its film adaptations, and how it was expanded. Fantastic Beasts film prequels that explore the wizarding world's history. Pottermore, an interactive website offering details about the lore, character backgrounds, and house sorting. And stage plays, Harry Potter and the Cursed Child continues the story beyond the books. So on different platforms, these stories are told, and it engaged audience from different background. We have watched the Matrix series, the Matrix of 1999, Matrix Matrix Reloaded in 2003, Matrix Revolutions in 2003, which was directed by Lana and Lily Wachowski. They have expanded that story beyond the films into animated films. The Animatrix provided backstory and side story not covered in the films. Video games, Enter the Matrix and the Matrix Online, offer interactive experiences that add to the story. Comics and websites, tie-ins elaborate on character background and world building. So this is how the transmedia storytelling examples I'm coming to some Indian examples like Bahubali series. The blockbuster film Bahubali, the beginning, and the Bahubali, the conclusion, explore the tale of kingdoms, betrayal, heroism, Mahismati. We all have watched that film, enjoyed it. There was a web series, Bahubali, before the beginning, and it faced some delays. The novel, The Rise of Shivagami, and other books in the series explore backstories and lore. And comics, graphics novels provide insight into the side characters and untold events. Video games, games like Bahubali, the game offer an interactive experience with the film's universe. And merchandising, coming with action figures, costumes, collectibles, t-shirts, caps, all these things, they also become the part of storytelling and part of the branding of that story and business of that story. So here how we go for transmedia storytelling. Mahabharata and Ramayana, I have already told you that the core ancient concept, which are numerous adaptations, including Ramanand Sagar's Ramayana, B.R. Chopra's Mahabharata, and recent reboots on OTT platforms. During COVID, we have watched Ramayana and Mahabharata again and again. Ramayana is one of the series which was prepared in India and which was dubbed into so many Indian and foreign languages and broadcast in different parts of the world, and which is having a world record as one of the all-time best television series.
But the same series, I can remember, when I was in the school, it was there on air. I have read the comic book which was developed by Amar Chitrakatha. I have read the series of stories which were presented in the form of books on Ramayana in the form of comics, right? And in Ramayana stories, now some of the filmmakers again coming with their different ideas and working on the same story and presenting it in a different way. So this is how we go for the transmedia storytelling on different platforms. Novels and retelling of the stories, comics and video games, all these are the part of your transmedia storytelling of Ramayana and Mahabharata. Why it is need of the hour? Why we are discussing it is need of the hour? Transmedia storytelling in India, I can say that it is growing trend with several franchises, mythological narratives, and cultural stories are expanding across different platforms. Transmedia storytelling is a dynamic and immersive way of narrative creation that broadens the possibilities of storytelling, offering creators new avenues to reach and engage their audience. And the concept of transmedia storytelling is need of the hour for several reasons. And what are all those reasons? Just coming to the point, because why it is required? Because it is engaging multi-platform audience. That is the first and foremost requirement. Suppose you are writing a book, you must have marked that suppose you are writing a book and your book is a collection of short stories or a novel or anything, any book that you have written. Just imagine, I don't have time to read that book. But fortunately, what you are doing, you are making the audiobook series, or you are making an audiobook of your written book or of your published book. I'm engaged somewhere, but I can listen your book, entire content of the book. You are making your book, your storybook, or your story is converted into a film. I'm watching that film, but I don't have time to read your novel. Right? So why it is required? What is the reason behind the need of the hour when we talk about transmedia storytelling? Because it is engaging multi-platform audience. Today's audience are fragmented across various platforms and devices. Transmedia storytelling allows for a cohesive narrative experience that can be consumed across different media formats, ensuring that the story reaches a wider audience. Deeper immersion. When somebody is watching your story in the form of an animated film, when you are watching that, what exactly you are doing? You are engaged in such a way that you are immersed in the story. You must have watched our kids, those who are playing video games. When they're playing the video games with such kind of characters, they become the part of it. They're immersed. So by offering multiple entry points and interactive elements, transmedia storytelling creates a more immersive experience for the audience. They can actively participate in the narrative, making choices and influencing the outcome of the story. Nowadays, there is a social media engagement by filmmakers. Suppose somebody is the hero of a film and his new film is released, and what we are doing, we are organizing live sessions with the hero, interact with the fans. Those fans are interacting with the hero on the particularly on the new story or the new film that is released. So when it is discussed there, what they are doing, they are sharing their set of experience. The audience, the fans, the followers, the readers, or the viewers, the film goers, what they are doing, they're sharing their experience. They're establishing a connection there, and that connection basically helps in expanding the territory of the storytelling. That connection helps in deeper immersion, enhanced brand engagement. Brands can leverage transmedia storytelling to create more engaging and memorable brand experience. By incorporating their brand into a multiple narrative, they can build stronger connections
with their target audience. Just imagine you are coming up with a new product and you want you have made an advertising film and you want to share it on with your audience. So you have released it somewhere for television, but the same branding advertisement can be altered for a different platform and can be used. So when we are using the same story, same advertisement in the changed form, morphologically we are changing it and putting it on different platforms so that we can engage the audience, those who are into different platforms, different media. I mean, the different media users, they can be targeted and the brand can reach to them. And the transmedia storytelling helps you in the evolution of storytelling. As I was giving you the example of the cave painting, from cave painting to your generative AI stories, artificial intelligence stories. From then now, there is an evolution of storytelling, and transmedia storytelling challenges traditional linear narrative and offers new and innovative way to tell your stories. You are talking about, forget about the fictional stories. Think about the news stories. Suppose I'm from Odisha, I'm giving you the example. Suppose there was a time where repeatedly every year farmers were committing suicide. We have been telling the story of those farmers, those who have committed suicide. But on the transmedia storytelling, what I can do, I can go for an altogether different presentation of that particular story. I can go with the illustrations. I can go with the graphical presentation. I can go with that story can be presented from different perspectives, taking different stakeholders for different platforms. So in that way, we are into the evolution of storytelling through transmedia storytelling. But here the important point is that the transmedia storytelling is not suitable for all types of stories or brands. It requires careful planning, coordination, and a deep understanding of the target audience. Do I have more time or shall I stop here? I'm about to finish my presentation. The transmedia storytelling is a versatile approach that can be applied across various fields and industries to engage audience, enhance experience, and expand narratives. One field is your entertainment and media, where you can use transmedia storytelling. You can use it in education, in the kind of lectures we are creating, the kind of teaching aids we are creating for our next generation pupils. For them, the transmedia storytelling can be used in education. Marketing and branding that we have already discussed, publishing and literature. There also, as I was giving you the example of your book and its audiobook and its audiovisual presentation. Literature, that literature can be presented in different forms. Tourism and cultural heritage, that can be presented on the website, can be presented on radio, can be presented on television, and films, documentaries can be developed, and all those style of storytelling will be different from each other. But yes, the particular tourism or cultural heritage can be promoted on different platforms. Sports and live events, health and wellness, social activism and awareness campaigns, corporate training and development,
technology and innovation. In all these fields, we can use transmedia storytelling. And what are the principles of effective transmedia storytelling? First is your narrative consistency. The moment we change from one platform to other, right, our style of storytelling changes, but the central point of the story should not be changed. That is most important. Each medium must respect the canon and rules of the story, because once you deviate from the central story, you will lose the temper of the story. So that is the requirement. That is the principle of effective storytelling. And fragmentation and synergy. Different parts of the story are fragmented across platforms, yet they must work synergistically to provide a coherent whole. Each medium should enrich the audience's understanding of the overall story. Thank you very much. Thank you for your time, and thank you for your patience hearing. And I'm grateful to Professor Bhanavat sir for providing me this opportunity. Thank you very much. बहुत बहुत आभार भाई फकीर मोहन जी। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से स्टोरी टेलिंग की जो पूरी यात्रा है उसका अनुभव हमें कराया, किस तरह से हम किसी भी स्टोरी के केंद्रीय भाव की रक्षा करते हुए उसे डिफरेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो मूल प्रकृति है उसके अनुरूप ढाल करके अपने लक्षित वर्ग को ध्यान में रखते हुए स्टोरी को कह सकते हैं। निश्चय ही इसके पीछे जो कथाकार है, कहानीकार है, स्टोरी टेलर है, उसकी अपनी रचना धर्मिता का भी प्रमुख स्थान है। आपने उसके महत्व, उसके प्रमुख सिद्धांत, उसके विभिन्न जो उसके पक्ष हो सकते हैं, पौराणिक संदर्भों से लेकर के उन गुफाओं से यात्रा शुरू करते हुए उसके व्यापक परिदृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसके पूर्व कि अपन प्रश्नोत्तर का सिलसिला प्रारंभ करें, मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका सिंह से कि वे आज के इस शाम को यादगार बनाने के लिए इस आपके वक्तव्य की स्मृति स्वरूप, सम्मान स्वरूप ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आपको भेंट करें। प्रियंका जी। You are muted, ma'am. So thank you so much, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज हमारे जो प्रोमिनेंट स्पीकर हैं प्रोफेसर फकीर मोहन नाहक सर, उनको एक जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर ग्रांट कर सकूं फ्रॉम द बिहाफ ऑफ कम्युनिकेशन टुडे एंड भारतीय विद्यापीठ। सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपकी इतनी डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन को हमने सुना, और जो भी हमारे माइंड में एक बेनिफिट ऑफ डाउट था रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू हैव कवर्ड ऑल दोस। Thank you very much, ma'am. Thank you, sir, for this certificate and thank you so much. Thank you. ई मेमेंटो नहीं आया अभी। हाँ। Thank you. Thank you sir, thank you so Thank you, much। sir. आपको हम व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे अभी। Thank you, sir. Thank you. अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो अभिभूत हैं आपके इस वक्तव्य को सुनकर के। उनकी लगातार टिप्पणियां भी आ रही हैं। कोई मित्र सवाल पूछना चाहें, अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें। मैं कहाँ देख सकता हूँ इसको? चैट बॉक्स आपके बिल्कुल राइट साइड में जो एक्सट्रीम राइट है ना, ठीक, उस पे यदि आप क्लिक करेंगे तो दिख जाएंगे। मिल गया सर, मुझे मिल गया ना। हाँ। मेरे ख्याल सवाल तो शायद कोई नहीं है। मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबने अपने फीडबैक दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। So thank you so much, sir. मैं एक क्वेश्चन रखना चाहूंगी behalf of the students or those who have the curiosity of developing this story. Sir, basically जब हम story telling करते हैं तो आपने बोला सबसे important होता है content and presentation. So how we can develop that content? क्या ऐसी practice है जिससे वो content development skills develop हो सकती है किसी भी individual में? पहली बात मैं कहूँ we are in our university, in Manipal University, Jaipur. We have introduced the two courses for undergraduate and postgraduate. One course is the art of storytelling.
which I am teaching to the master students. At the same time, we are offering another course that is transmedia storytelling. And transmedia storytelling is a course of a 3-credit course for the students. Here I just want to add, आपको एक बताना चाहूँगा, when we develop a story, right, everything starts from ideation. So that one line idea can be developed to a story. As a professional story writer for last almost 25 years, I can say, I have a practice. Suppose I am observing something, I find that it is something unique, which is different, which can be developed into a story. I make just one line note of that in my note sheet. When that line I note, even after 3 months, when I read that, I can recall that story, what happened on that particular day, and I can develop that into a story. So from where that ideation comes, once idea is fixed, then only you can develop that into the content or into the story, into the structure. So idea, from where we get ideas. हम लोगों को पता है वो उनका पंच लाइन, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, राइट? सो वो आइडिया कहाँ से आती है? आइडिया आती है हमको पढ़ाई से. जितना ज्यादा लोगों को हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई आइडिया हमें स्ट्राइक करती है. जी. The more we read, the more we get ideated. The most important part for ideation is your observation. Right. How you observe the things. Do you have a different perspective than the common man? आम आदमी जो देख नहीं पाता, क्या आप वो देख पाते हो? If your observation is perfect, if your observation is strong, then you can develop the story. So, what is the difference between seeing and observing? मैं आपको देख रहा हूँ और आपको observe कर रहा हूँ. What is the difference? The basic question you ask a student, that what is the difference between seeing and observing? आपको वो गाना याद होगा, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कुछ लोग याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं. Right. वही वाला गाना है ना सर? मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ गाने में, जी लेकिन वही है. सर, वही है. कुछ लोग कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं. That means we are roaming in the market. Hundreds of people are coming in front of us. We are meeting every day, right? So many people we come across, but we don't remember everybody. But we remember a person, right, who has struck the chord in us. जिनको देखने के बाद पता नहीं हमारे दिमाग में कुछ चेंजेस हुआ, हमने उसे याद रख लिया. And that person became the character of my story. Very good point. तो देना चाहिए गाइड से जो हमारा At the same time, I just want to tell you. एक चॉकलेट ले लेंगे, चॉकलेट पैक करके उस समय उसको दे देंगे, ठीक है ना? क्यों गाइड से तो भाभी को कह देना चाहिए कि भाभी. विनय कुमार शुक्ला जी आपका. हाँ. Sir, As I was giving the example of seeing and observing. Seeing मैं जिसको बस देख लिया उतना, that is I have just seen. But the observing means seeing with an intention. Seeing with an objective. The moment I see somebody with an intention, with an objective, that becomes observation. But here comes one important point, and that important point is, suppose I am observing Vanavat sir. He should not know that I am observing him. The moment he comes to know that I am observing him, what will happen? He will become conscious. become conscious, right? He will become conscious. He will not be in his own original form. When you are not in the original form, or you will pretend to be in original form, but I can't get the real person there. So that will be difficult for me to develop the character. Got it? So the more you observe people, the more you talk to people, the more you read, all these are the gateways, all these are the pathways from where we get ideated. The ideas are getting germinated in our mind. So once you decide to write something on a particular issue, right, so many ideas are coming, you note it down, all those ideas. Then comes zeroing on that particular idea. You have n number of ideas, but from there you have to pinpoint only one idea which you are going to develop. So you have to
make a judgment to which idea is better, which idea is best, which idea is best amongst all, which idea is better than the others. So based on that, you take the decision, and now you expand that one-liner idea to a Into story. a story, right? So when you are developing the story, if it is a fiction, then I was discussing about the archetypes. All those archetypes are common, right? You will find all these characters. And in fictional story writing, what we are developing, what we are taking, one is the central character, the primary character, whom we call as in storytelling, we call them the primary character. Then comes the secondary character. हीरो हीरोइन विलेन ये प्राइमरी कैरेक्टर हो गए, Right. उसके माँ बाबूजी भाई बहन ये सारे सेकेंडरी कैरेक्टर आ गए, उसके दोस्त, उसके जो उनके घर में आने वाले नौकर और all those characters, they are your tertiary characters. Tertiary. So when you are expanding story, you are writing that story, if you curtail any tertiary character, that won't affect your story. अगर कोई कैरेक्टर को मैं उड़ा दिया टर्शियरी कैरेक्टर को, that won't affect my story. But primary character में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, that will affect my story. Right. Got it? At the same time, language is the, what you can say, the carrier of your story. Language is the base of your story. What kind of language you are using? The moment you go to the ancient storytelling, where we have used all the formal languages, all formal language, right? मान्यवर राष्ट्रपति महोदय पधार रहे हैं, महाराजा पधार रहे हैं. Right. क्या आज हम वो बोल रहे हैं? Language, are we using that language? No. So based on your target audience, based on your requirement of the story, you have to choose the language. And the storyteller must have the command over the language. That is most important. I must know, if I'm writing a story, I must know the language, what I'm using, and what kind of words I'm selecting for that story. That is most important. Suppose I'm writing a drama. Drama is also a form of story. If I'm writing a drama, in drama, what we are writing, it is in the conversational form. In the conversational form, we are writing the dialogues. So when we are writing the dialogues, can I write the dialogue of a priest just like an advocate? Can an advocate or can a judge speak like a priest? No. So the kind of words they use in their professional life, in their day-to-day life, those words, those jargons, those vocabulary should be used for those characters. So while we are writing those characters, how we can develop that? I'm a new writer. I have never met an advocate. I've never met a judge. I've never met a priest. But I'm writing about all those characters, taking those characters in my story I'm writing. So what I should do? Before writing the story, I must talk to those people. I must interact with them. I must learn what kind of vocabulary they are using in their day-to-day life, in their professional life. If you are conversant with those jargons or their, what you can say, the kind of language they are using, it will be easier for you to develop the story, to write the story. I think I have addressed your question. Yes, सचिन sir, मोहन very जी, well explained. अब जैसे आपने दिनकर की बात की, रश्मि रथी, जी सर. अब वो कर्ण की स्टोरी दिनकर ने अपने ढंग से किया उसको. जी सर, जी बिल्कुल. मैथिली शरण गुप्त ने केकई की व्यथा को समझा, उसने वरदान तो मांग लिया कि राम को वनवास भेजो जी. लेकिन केवल मैथिली शरण गुप्त वो कवि हैं जो केकई को पश्चाताप हुआ होगा कभी बाद में, हुआ नहीं हुआ वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो भी एक तरीका है अपनी बात को कहने का. नरेंद्र कोहली किस तरह से उन्होंने जिस रामायण की आपने बात की, अपने पूरे इसमें इतने संदर्भ दिए. नरेंद्र कोहली रामायण को, वही पात्र हैं सारे के सारे और वही घटनाक्रम है, लेकिन कसौटियां बदल गई और वो आज की पूरी व्यवस्था के ऊपर तीखा कटाक्ष. ठीक है. तो वो तो मुझे लगता है कि उसकी जो क्रिएटिविटी है उस पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से उस स्टोरी को डेवलप करता है. वही जो नाटक में जो डायलॉग लिख रहा है, वो जो फिल्म बनेगी उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. हाँ बिल्कुल है वही थीम, वही
मन्नू भंडारी की कहानी रजनीगंधा मुश्किल से 3, 4, 5 पेज की, पूरी 3 घंटे की फिल्म बन गई उसके ऊपर। जी जी एक एक एक्शन में जो इमोशन है, मैंने तो कहानी भी पढ़ी और फिल्म भी देखी, जी तो वो पूरा का पूरा जो प्रसंग उस समय याद आता है। तो मुझे लगता है कि जो भी डायरेक्टर है और जो स्क्रिप्ट राइटर है, उनकी अद्भुत क्षमता है किस तरह से उन्होंने उस ऑडियंस को 3 पेज की कहानी पर पूरी 3 घंटे की फिल्म बन जाए, जी कोई सर। छोटी बात नहीं है। सर वो तो 3 यही, पेज की कहानी भी एक लाइन से ही शुरू हुआ होगा, हाँ हाँ बिल्कुल आइडिएशन एक ही लाइन से है। हाँ 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 हाँ, बस यही है। तो ये तो सही है कि आपकी जो विधाएं हैं अलग अलग, उसमें किस तरह से कर सकते हैं, ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है जी कि आप कैसे उसे प्रेजेंट करेंगे। और जैसा आपने ठीक कहा कि हर विधा की अपना एक चरित्र होता है, जी उसका अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जी उसको आपको समझना होगा, तभी आप उस क्षेत्र में आगे जा पाएंगे। चलिए, और कोई किसी की टिप्पणी या सवाल? सर तो हाँ may जी, I sir, I am Dr. Rajiv Yadav from Arya College of Engineering, Professor. जी I thank you for Kiram on sir. आपने नमस्कार इतना सर। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार सर। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर बोला, तब मैं आपसे इंटरेक्ट करना करूँ थोड़ा सा इंटरेक्शन के लिए, जी कि जब हम किसी भी लेक्चर्स में जाते हैं तो लेक्चर्स के अंदर भी हम स्टोरीज क्रिएट करते हैं अपनी खुद की भी, जी कि whenever some topic has to be explained, तो उस मोमेंट पे हमारे सामने 60 या 70 बच्चे ऑडियंस के फॉर्म में बैठे होते हैं, जी और उसको जो टीचर होता है ना, जो बेस्ट टीचर होता है, वो जो सबसे टफेस्ट बच्चा होता है ना, जो समझना नहीं चाहता, उसको भी जी समझाने की ट्राई करता है इन देयर ओन वर्ड्स, इन देयर ओन प्रेजेंटेशन। लाइकवाइज जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जी जब वो मित्रों, भाइयों और बहनों बोलते हैं ना, तो जो जी लास्ट ऑडियंस बैठा होता है ना, वो भी कनेक्ट हो जाता है उनके साथ। जी जहां भी जाते हैं वो वहीं से उन्हें कनेक्ट बना देते हैं कि मैं हरियाणा का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं बिहार का हूँ। जी तो नेटवर्क चला गया शायद इनका। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं या क्या नेटवर्क चला गया? सुन रहा हूँ सर, मेरा जो कॉल आ गया था बीच में कुछ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ। एवरी टीचर इज ए क्रिएटर, एवरी टीचर इज ए स्टोरी टेलर, और एवरी स्टूडेंट इज एन ऑडियंस, और जी मे बी समटाइम्स स्टूडेंट्स भी हमारे को कुछ समझा देते हैं अच्छी तरीके से। जी ये पार्ट है सर। थैंक यू फॉर किरण फॉर योर नाइस इंटरेक्शंस विद यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सर। ये मैं तो रोज कहता हूँ कि हर टीचर जब क्लासरूम में जाता है, इज द बेस्ट स्टोरी टेलर एवर। बिल्कुल। वो क्लासरूम में बच्चे उसके दर्शक है या श्रोता है, और वो कहानी कहता है जाके क्लास में। राजीव जी, वही बात है, जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो किस तरह से बात करेंगे, और जी वही आपके दादाजी ने जब आप 4 साल के थे तब कैसे जी बात की थी, कहानी वही है। जी वही सर। रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं, है जी ना? सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ये बोल के एक ही दिन में 3 लेक्चर होते हैं, 3 अलग अलग सेक्शंस में सेम टॉपिक पे। हाँ जी हाँ तो उस ड्यूरेशन के अंदर में तीनों लेक्चर्स जो ना, वो तीनों क्लासेस में डिफरेंट होते हैं सर, और डिफरेंट जी एग्जांपल्स के साथ होते हैं, डिफरेंट स्टोरी के साथ होते हैं, बिकॉज ऑडियंस डिफरेंट होता है सर। जी बिल्कुल। ऑडियंस ड्राइव करते हैं कभी कभी राइटर्स को, कभी कभी राइटर्स ड्राइव करते हैं ऑडियंस को। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। बिल्कुल जी बिल्कुल सही जी कह रहे हैं जी आप। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर नाइस इंटरेक्शन सर। थैंक यू थैंक यू राजीव जी। सर। थैंक यू। सर, कैन आई इंटरवीन? हाँ हाँ यस बिल्कुल सर। यस सर। बिल्कुल। फकीर मोहन जी, आपके बारे में बहुत सुना था मैंने, जी सर। और थैंक यू। क्योंकि चिशु शर्मा जो आप ही के यूनिवर्सिटी में है, जी सर। वो मेरे कलीग रह चुके हैं टेक्निया में, जी 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 सर। थैंक यू। तो बहुत सुना था आपका। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया सारा कुछ। और थैंक यू सर। मैं ये कहता हूँ कि हर टीचर कोई भी लाइन का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे मीडिया का हो, जर्नलिज्म, कोई भी लाइन का हो, वो जी उसको पढ़ाना भी एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से आज के बच्चों को, जी so that यस it becomes very interesting, the concepts become very interesting, and students also develop an interest in learning. जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू सर। सर अपने पास में एक बायजूस कंपनी है, जो बायजूस आई थी, तो सारी स्टोरी टेलिंग के बिहाफ के ऊपर दे हैव क्रिएटेड लॉजिक्स इन साइंस। जी तो हर स्टूडेंट को बायजूस बड़ा पसंद आया था सर। जी तो बायजूस है, और इसके अलावा कुछ भी चीज अगर आप करते हो तो एक्सप्लेनेशन मैटर करती है, और एक्सप्लेनेशन, स्टोरी और क्रिएटिविटी, प्लस में आपके कंटेंट आप कितना रीड कर पाते हो बुक्स के साथ में। आज के जो स्टूडेंट्स है वो लैग कर रहे हैं रीडिंग के अंदर सर। जी। अब एक्चुअली सर दिक्कत ये है कि अटेंशन स्पान जो है ना बच्चों के, वो हाँ जी। घटता जा रहा है। अब डाइवर्जन बहुत रातों है। रात रात भर बैठ के पढ़ने की जो आनंद थी,
हाँ अब हाँ देख रहा हूँ बच्चे मेरे कहानियां पढ़ना नहीं चाहते। मैं खुद कह रहा हूँ सर, प्राइमरी स्कूल में मेरे स्कूल के लाइब्रेरी के मैंने सारे किताबें पढ़ लिए थे, हाँ हाँ सारी किताबें। और जितने कहानियां, ये चीन देश की कहानी, ये अरब देश की कहानी, जितने लोक कथाएं, सारी कहानियां पढ़ लिए थे। अब फकीर मोहन जी वो कहाँ है कहानियां, वो पत्रिकाएं, लोक कथाएं समझता ही नहीं है बच्चा। जी चंदा मामा है ना, वो वेताल उड़ जाता था कहानी कहते जी कहते, है ना। जी पराग, नंदन, इन बच्चों के रीच में ही नहीं है वो सब तो अब। जी फकीरा सर, एक इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया गया, सर आप प्रोफेसर हैं, आप बुक्स लिखते हैं? मैंने कहा यस। जी, तो बोला हाँ, उन बुक्स के आगे आज राइटर के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? हाँ, मैं कहा सर चैलेंजेस यही आते हैं, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी चीज कंटेंट दोगे तो वो पढ़ लेगा, बुक्स जी कोई नहीं पढ़ेगा। जी तो लॉन्ग स्टोरीज को कट शॉर्ट में करके इन ब्रीफिंग में चाहते हैं हर एवरीबडी इन वन लाइन। बस जी। वही सबसे बड़ी चुनौती है। अब वो कैप्सूल में हो गया है कहानियां। यस सर। हाँ अब तो वो जो कारवा आ गए ना छोटे छोटे, उसमें वो कहानियां आ रही है बच्चों के जी लिए। जी उसमें वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो है ही नहीं। मैं हम अभी सर एक्चुअली हमारे करिकुलम में जब हमने वो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग और ट्रांसमीडिया स्टोरी टेलिंग को इंट्रोड्यूस किया, यस तो सर। हमारी टारगेट यही थी कि कम से कम बच्चे स्टोरी लिखना शुरू करें, बच्चे इन्वॉल्व हो स्टोरी बनाने में। तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं आइडिएशन के लिए। बच्चों को मैं थीम देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यस सर। पूरे एक इंटरेस्टिंग है, मान लो इस मीटिंग में अब हमारे पास 50 लोग बैठे हैं, 50 लोग हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। मैं आपको सिर्फ 2 शब्द कहूंगा और आपको कहूंगा कि आप एक कहानी लिखिए। मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ 50 डिफरेंट स्टोरी, उसी दोनों शब्दों के ऊपर 50 डिफरेंट स्टोरी मिलेंगे। एंड 50 स्टोरी को आप कंपाइल कर देंगे, एक बुक हो जाएगा। बिल्कुल। और 50 अलग अलग स्टोरियां विथ अलग डिफरेंट इमोशंस विथ डिफरेंट कैरेक्टर्स। एग्जैक्टली सर, रिसर्च में चैप्टर राइटिंग हो गया आपका सेम रिसर्च के पार्ट पे। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। मगर सर एक बात है इसमें कि अब जब मैं थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूँ, आज की डेट में जो पहले नॉवेल्स या सीरीज होती थी जो जी बच्चे पढ़ते थे, डिटेक्टिव सीरीज और गर्ल्स गर्ल्स के लिए स्पेशली, आई शुड बी सेइंग रोमांटिक की होती थी, मिल्स एंड बून्स एंड ऑल द जो थी। अब आजकल बच्चे किताबें पढ़ते नहीं है, लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो किताबें कोई लेता नहीं है। वो तो अभी चैलेंज है सर। मैं हाँ, मेरे वही घर में चैलेंज है लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई भी आती है, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी कहती है आपके पास किताबें कम है, और ऐड करो और ऐड करो, तो बच्चा कोई लेता ही नहीं। जी अब तो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम शुरू कर दी है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। सब ऑनलाइन पे मिल जाएगा आपको, सारे जर्नल्स जितने बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं उनसे कोलैबोरेट कर लिया। कितना 300 करोड़ रुपया कितना उसके लिए इन्होंने रखा है प्रोविजन, अभी 2-3 दिन पुरानी न्यूज है। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सारे जर्नल ऑनलाइन हो गए, है ना। पता नहीं अब ये खत्म जो हो किताबों, छपे हुए किताबों की जो है ना खुशबू, छपे हुए शब्दों की, ये तो भूल जाएंगे बच्चे अब, है ना। जी ये ऑनलाइन पॉइजन हो जाएगा, बच्चों के जनरेशन खत्म हो जाएगी सर। जैसे क्या मोबाइल करोगे, आपके जो एनईपी है जिसकी इतनी चर्चा है, उसी में आपकी जो प्राइमरी क्लासेस है वही डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हो रही है। अब क्या करोगे आप? सर, आजकल बच्चे अपने घर के पापा मम्मी के मोबाइल नंबर भूल जाते हैं, मोबाइल लॉस्ट हो गया तो। हमें भी याद नहीं, ये हमारे अलावा ये भी फैक्ट है। अभी एक ऐसे ही हम उस वेबिनार में था मैं, तो स्पेलिंग भूल गए बच्चे, क्योंकि ऑटो जनरेटेड आ रहा है। हैप्पी बर्थडे है तो जैसे ही वो आएगा तो अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा हैप्पी बर्थडे। उस बच्चे को स्पेलिंग ही नहीं पता है कि आप इसके हैप्पी बर्थडे की। बस मैं लास्ट में एक बात बोलूंगा कि बच्चे व्हाट्सएप ज्यादा यूज करते हैं और व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज ही लिख के आते हैं एग्जाम में भी। वही हो रहा है और क्या। नहीं स्पेलिंग्स सर, गलत होते हैं, वो जो शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशंस लिख देते हैं। संजय सर, मैं जस्ट यहाँ बोलना चाहूंगा। मैं एकेडमिक्स में आने से पहले जब इंडस्ट्री में था, तब मैं ये ट्रेंड पिछले 10 साल से, जब से आपके व्हाट्सएप आए ना, उसके बाद की ट्रेंड कर रहा हूँ। मास्टर्स के बच्चे जर्नलिज्म पास होके आए हैं, मैंने उनके रिटर्न टेस्ट लिया, इंटरव्यू कर रहा था रिक्रूटमेंट के लिए, राइट सर। 4 लाइन प्रॉपरली लिख नहीं पा रहे हैं, उसमें वही दिक्कत है कि शुड SUD शुड लिख रहे हैं, राइट। मतलब जैसे व्हाट्सएप में जो मैसेज कर रहे हैं उसी टाइप के लैंग्वेज में न्यूज़ लिख रहे हैं बच्चा। वही हो रहा है सर व्हाट को WHT लिख देते हैं।
हाँ 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 सिंपल चीजें ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं कि अगर आदमी लैंग्वेज के हिसाब से चेक करे तो नंबर नहीं मिलेंगे, हम कंटेंट के हिसाब से मार्क्स दे देते हैं इनको। सही सही बात है। चलिए साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू तो सो मच। हाँ, Thank you. चलिए अपन इसको वाइंड अप करते हैं अब। और अब मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की जो हेड है आयुषी सचदेव चोपड़ा जी, उनको कि वे अपनी ओर से वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। आयुषी जी। Thank you, sir, and good evening to all of you, all the panelists, and Professor Fakira Mohan, sir. It gives me great pleasure to present vote of thanks and thanking you for this overwhelming and very intellectual session. जो आपने हमें सबको दिया आज, आपने सारा एक्सप्लेन करा और मैंने एंड में देखा कि बहुत अच्छी चर्चा, बहुत माइंड बॉगलिंग चर्चा हम बहुत सारे सीनियर एक्सपर्ट्स के साथ आज कर पाए और उनका व्यू पॉइंट भी जान पाए. So thank you for giving us time on behalf of Bharatiya Vidyapeeth and communication today. It is our pleasure to have you on board for this intellectual session. We hope for more sessions in the coming future. And then I would like to thank Professor Sanjeev Bhanawat sir and MN Huda sir, who has visioned this great intellectual series and making it possible in every ways they can. तो संजीव बनावत सर बहुत अच्छे एक्सपर्ट गेस्ट के साथ हमें इंट्रोड्यूस करते हैं और इतने न्यू टॉपिक्स, ये मेरा भी स्टोरी टेलिंग को लेके जो टॉपिक है, फर्स्ट टाइम थ्रू आउट माई जर्नी मैंने इसको विटनेस करा. सो थैंक यू सर फॉर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस एंड थैंक यू टू ऑल ऑडियंस, टू द बैक एंड टीम फॉर मेकिंग इट पॉसिबल. थैंक यू सो मच. चलिए साहब, हमारी ओर से भी धन्यवाद। और अगली वेबिनार का जैसे भी आगे आयोजन होता है हम आपको सूचना देंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। अंत में फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कीजिए, उसकी डिटेल्स चैट बॉक्स में है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि ये जो अपना अभियान है ये निरंतर आगे बढ़ता रहे। और आगे का जो कार्रवाई है अपनी जो सर्टिफिकेट्स जनरेशन का है, जिन बच्चों कईयों को तो मिल गया है, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में उनके मैसेज आ रहे हैं, और जिनको नहीं मिला है वो आगे जो प्रियंका जी हैं वो उस मोर्चे को संभालेंगी, आपको विस्तृत जानकारी देंगी। हमारे एक्सपर्ट और जो मित्र हैं जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है वे चाहें तो जुड़े रहें, चाहें तो क्विट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you very much for Thank this you so much. opportunity. I'm thankful sir. to all of you for your wonderful feedback and interaction. And the moment is treasured in my memory forever. Thank you very much. Namaskar, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. It was wonderful. It was a wonderful webinar. Very, enlightening indeed. बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर. I was listening throughout. Thank you so very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you very much. ये Thank डॉक्टर you all. शील निधि हैं, ये भी भारतीय विद्यापीठ में ही है जो आपको लास्ट में धन्यवाद दे रही है। जी. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, bye. Bye. Can I leave, sir? हाँ Yes, sir, you certainly, can. no issue. Thank you, sir. Thank you. Dear participants who have generated their certificate, thank you so much for your valuable time and cooperation in this webinar. And those who haven't generated their certificate, kindly double click on the link which I have shared in the chat box and generate your certificate by filling up the details correctly. थैंक यू Once you प्रियंका will दीदी. get, thank you Sonu ji. आज तो मुझे लगा कि मैं जुड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा डाटा धोखा दे दिया आज, क्योंकि अच्छा, अपडेटिंग में मोबाइल लगाने के कारण डाटा सभी खत्म हो गए थे। तो अचानक आज मानवाधिकार कार्यक्रम भी थे आज ऑनलाइन पे, तो जी. मुझे मैंने ध्यान दिया नहीं और डाटा सभी खत्म हो गए। तो शाम का कार्यक्रम था तो मैं अचानक मुझे याद आया कि अब सर का कार्यक्रम लास्ट होगा, तो मैंने जी. तुरंत बाहर आकर के वाईफाई कनेक्ट करके किसी तरह जुड़ने का प्रयास किया। और धन्यवाद आप प्रियंका जुड़ जी। गए, क्या बात है। सोनू जी मुझे लगता है फिर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। Okay, the participants who are still connected with us, kindly generate your certificate as soon as possible. I am here with you all for next 5 to 10 minutes. Once you will generate your certificate, kindly leave the meeting and drop the message in the chat box that you have received the certificate.
Participants who have received their certificate, kindly drop the message in the chat box. And thank you so much, Archana ji. You have received the certificate. After receiving the certificate, you can drop the message and leave the meeting. Thank you so much. And those who haven't generated, kindly generate it soon. I am here with you for next 2 to 3 minutes. Okay, by the end of this meeting, I won't allow anybody. Thank you so much, Dr. Nisha ma'am. Thank you so much for your valuable time, because I can see there are 1 or 2 participants who are still, who have just joined now. So I won't allow them because it's already the time to end the meeting. Dr. Sandeep Kumar ji, Harpreet Kaur ji, and Riya, kindly generate a certificate as soon as possible. I'm here with you for next 2 to 3 minutes. After that, I'll close the meeting room. For certificate generation, you can click on the link mentioned in the chat box and generate your certificate by filling up the details correctly. Thank you so much, Riya ji. Thank you so much, Harpreet. Dr. Sandeep Kumar sir, kindly generate your certificate as soon as possible. Dr. Sandeep ji, are you there? Are you filling the form? Okay, I will close the meeting room in next 1 minute. I hope if you haven't generated your certificate, kindly fill the form and drop the message in the chat box so I can help you out if you are facing any kind of technical issue. Otherwise, I'll close the meeting in next 1 minute. The participants, thank you so much for your valuable time. Okay, I guess Sandeep sir, you just left to log off. You just forget to log off. So right now I'm just logging off the meeting. I hope you have received your certificate. Thank you so much, everyone.